morning. I am Pranav Prakhar. Let's take a look at newspaper headlines published from Delhi today. First, let's take a look at the Hindu newspaper. It says, GST stalemate resolve, rollout deferred to July 1st. The next headline says, with EC backing, Akhilesh rides away with bicycle. The tussle between father and son Mulayam Singh Yadav and Chief Minister's son Akhilesh Yadav has gone to Election Commission and given a green signal to Akhilesh Yadav, who takes the bicycle, the sign of Samajwadi Party election campaign. Daily ATM withdrawal hike to 10,000, which is a good relief to the people of India after demonetization. Now you could withdraw as much as 10,000 rupees from ATM machines. There is another story at the footnote, which is a tragic story. It says, train mows down two boys taking selfie. Selfie, a craze in India and world over, but this time it proved fatal for two boys who were taking selfie in front of a train. Moving on to the next newspaper, the Indian Express. It says, cycle goes to Akhilesh, father remains spoke in party view. Election Commission awards symbol to Samajwadi Party faction of Chief Minister. Indian Express also gives the due credit for GST, headway on dual control. GST likely in July, says Finance Minister Arun Jaitley. In Hindustan Times again, Akhilesh Yadav wins cycle race. Mulayam dealt big blow day before filing of nominations. May go to court as son gets symbol and party name. Hindustan Times also gave credence to daily ATM cash withdrawal limit up from 4,500 rupees to 10,000 rupees. There is another story at the footnote on the front page of Hindustan Times. It says, body scanner trial caught in Mangal Sutra sari tangle. Yes, you may not be able to decipher the news. Let's read at least a paragraph of this story. It says, the elaborate glass and metal knit work on an Indian women's sari and a reluctance to remove to the Mangal Sutra has put an American full body scanner on the brink during trial at the capital's Indira Gandhi International Airport. It has to be seen how a German machine behaves, which is next in for a test. Well, that's an interesting story. Moving on to Times of India, it says, the lead story says, you can now withdraw up to 10,000 rupees a day at ATM. Another economic news that's on the front page of Times of India, Centre State ends GST logjam. Rollout now in July. Bengal Finance Minister strikes loan note of dissent. Here there is the footnote of Times of India. There is an interesting story which is about a film that was made on Fogart, Geeta Fogart, the wrestler from India. Real Fogart pulled into online dangle with over Mehbooba meet because this a girl who is playing Geeta Fogart in her biopic, she is from Kashmir. She has been rebuked and trolled by people in the state for meeting the Chief Minister and being called all sorts of names, including Agent of India, which is a very, very difficult and very uncalled for comment. In another story in Times of India, again it says about the UP election and the Samajwadi Party and Akhilesh. It says, Election Commission gives cycle to Akhilesh, puts spoke in Mulayam Singh Yadav's wheel. Son's faction is real, SP poll panel says. Now let's move to the Business Daily, the Mint newspaper, a part of Hindustan Times Group. The story which is getting the most prominent in the Mint newspaper on the front page is, stage set for GST rollout on 1st July. Centre state reach agreement on sharing of administrative power. The most advanced, or you call it the most highest ramification that could be seen in the Indian taxation will be the GST, where stage is already set for July 1st rollout of GST. Another important news that is on the front page of Mint, it says, demonetization effect. IMF cuts India's growth forecast. In another story on the forecast, wholesale inflation quickens in December. India's wholesale price inflation accelerated to 3.39 in December from 3.15 in the previous month.
On the footnote of the Mint newspaper, it says richest 1% Indians owns 58% of the country's wealth, says Oxfam report. But then this report is not only meant for India. This kind of dissimilarity exists even more in Europe, in London, in UK, in America, in Australia. But then Oxfam chose India and made it a good headline, a good read. Richest 1% Indian owns 58% of country's wealth. Oxfam, as we all know, is a UK organization, and it also goes down very heavily on the richest 50% who almost owns half of Britain. Well, now let's look at the Economic Times. GST rollout from July 1 as center state reach deal. States to access 90% taxpayers with turnover under 1.5 crore. Well, the story says states to assess 90% taxpayers with turnover under 1.5 crore, rest with center, state and center to share control for turnover exceeding 1.5 crore. So that's the limit and the benchmark set, and GST is all set to finally roll from 1st of July. And we are very eagerly waiting for the new budget, which has been preponed and will be in February this time. In another story, Modi Sarkar dials social security number. Well, the trump card, the election trump card, as we may say, is already blown by trumpet has already been blown by Modi Sarkar. It says income transfer scheme on cards to help address poverty may be announced in budget. Well, the trumpet, Modi trumpet for social security has already been blown, and well, that will be seen in election and in next 2 years before 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन. अब हम बढ़ते हैं हिंदी अखबारों की तरफ. हिंदुस्तान अखबार ने सबसे पहले सुर्खियां में छापा है चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर सुनाया फैसला. मुलायम खेमे को लगा बड़ा झटका, पिता से मिले मुख्यमंत्री कहने का मतलब तात्पर्य है अखिलेश यादव. समाजवादी पार्टी और साइकिल अखिलेश की. पिता और पुत्र के इस लड़ाई में इलेक्शन कमीशन ने अपना सहमत जताया है पुत्र पे, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव पर, और उन्हें साइकिल और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल का उनको हक दिया है, और वो साइकिल अपना चुनाव चिन्ह और पार्टी समाजवादी पार्टी का नाम अपने साथ रख सकते हैं. सिद्धू कांग्रेस में शामिल, यशपाल भाजपा में हुए. और अगली खबर में बढ़ते हुए हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है भाजपा का ओबीसी और बाहरियों पर भरोसा. उत्तर प्रदेश इलेक्शन में ये कटाक्ष करते हुए या एक टिप्पणी करते हुए हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है भाजपा का ओबीसी और बाहरियों पर भरोसा. दैनिक जागरण पर आगे बढ़ते हैं. दैनिक जागरण ने लिखा है पिता से साइकिल रेस में जीते अखिलेश और शीतलहर ने किया जीना मुहार. पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में सर्द हवाएं. एटीएम से निकालिए अब 10,000 रुपये. ये एक पहले पृष्ठ पे दैनिक जागरण ने मुख्य खबर बनाया है. इसके अलावा दैनिक भास्कर में जब हम आगे बढ़ते हैं, दैनिक भास्कर में देखते हैं सिर्फ 8 लोगों के पास है दुनिया के आधे गरीब लोगों के बराबर संपत्ति. गरीबों की तुलना में 182 गुना बढ़ी 1% अमीरों की संपत्ति. ये पहला खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने. और इसके और भी एक खबर जो अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर है उसको भी दैनिक भास्कर ने अहमियत दी है. चुनाव आयोग का फैसला, सपा और साइकिल दोनों अखिलेश की. अखिलेश 2 दिन में लाए 4,716 एफिडेविट. मुलायम ने 8 दिन में एक भी नहीं दिया. ये एफिडेविट ज्ञात होगा जो इलेक्शन कमीशन में जमा करना था. पार्टी किसके हाथ रहे, मुलायम सिंह यादव के हाथ या उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव के हाथ. और अंत में नवभारत टाइम्स, साइकिल टीपू चलाएंगे. टीपू ज्ञात होगा, टीपू अखिलेश यादव का पेट नेम है या क्या नाम है, इसलिए चुनाव चिन्ह और पार्टी पर मुलायम का दावा चुनाव आयोग में खारिज. साइकिल टीपू चलाएंगे, मुलायम के सामने बस 3 ऑप्शन. 1% अमीरों के पास देश की 58% दौलतें, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है. लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट पूरे दुनिया में लगभग ऐसी ही होती हैं. अमेरिका में भी अमीरों के पास बहुत ज़्यादा 1% अमीरों के पास इतनी संपत्ति है जो आधे अमेरिका से अमेरिकन लोगों के पास जितनी हो लगभग उतनी. और ऐसा ही हम कह सकते हैं यकीनन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में. नवभारत टाइम्स ने जीएसटी बनने लगी बात,
अब 1 जुलाई से लागू होगा, इस बात को अहमियत दी है। और नवभारत टाइम्स ने एक और खबर फिर से छापी है, ट्रेन के आगे फ़ोटो खींचने में गई 2 जानें। ये दर्दनाक बात है कि सेल्फी खींचते हुए 2 बच्चे ट्रेन के आगे अपनी जान गंवा बैठे। इससे चेतावनी भी है और इससे हम आगे इस खबर पे और नज़र रखेंगे। तो ये था आज के अखबारों की मुख्य सुर्खियाँ। कल हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे दिल्ली से प्रकाशित मुख्य अखबारों की सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे प्रणव प्रखर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।